सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उहिब्बुस सालिहीना व लस्तु मिनहुम। उहिब्बुस सालिहीना व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। The poet says, I love the pious, I love the salihin, I love the awliya, I love the urafa, even though I am not one of them. And I do this in the hope that by loving the salihin, Allah grants me salihin. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. हुब्बे दरवेशा कलीदे जन्नत است. हुब्बे दरवेशा, the love of the pious is the key to paradise. And this is within the light of Quran and Hadith. This is not exaggeration. This is the teaching of our deen. The love of the friends of Allah is the key to the pleasure of Allah. The love of the friends of Allah is the key to paradise. Hubbe darwesha kalide jannatas, दुश्मने ईशा सजाए लानतस। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, क्या बात है। कैसे 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 आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। Do you not make this dua day and night? In Fajr, in Zuhr, in Asr, in Maghrib, in Isha. We just read Salat behind Qibla. Hafiz Sahib, Zida Majduhu. Did he not recite Ihdina Sirat al-Mustaqim? Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Ala Hazrat says, तेरे गुलामों का, सरकार तो फिर सरकार है ना, आका तो फिर आका है, मौला तो फिर मौला है। जो वाकई उनका गुलाम बन जाए अल्लाह उसे ये शान अता फरमाता है। ख्वाजा आजम को अल्लाह ये शान अता फरमाता है, गौसे आजम को अल्लाह ये शान अता फरमाता है, दाता साहिब को अल्लाह ये शान अता फरमाता है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। Understand this here. What is Imam saying? That if you follow in the footsteps of the followers of our Nabi alayhi salatu wasalam, you are guaranteed to lead you to the doors of Allah subhanahu wa ta'ala. तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके। सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, we congregate this evening in this beautiful Jami' Masjid Ghawdiyah, Blackburn, to celebrate and commemorate the Urse Mubarak of one of the most luminous, outstanding, revered, famous awliya of the ummah of Rasulullah alayhi salatu wasallam. Awliya have always existed.
Awliya are always around. Even today, they are present. But the muqam and martaba, the shuhrat and the izzat, the dignity and the honor, the name and the fame that Allah Ta'ala has granted to Khaja Khaliqa, Moine Bekasam, Ataye Rasul Sultanul Hind. This is no doubt from the special favors of Allah upon him. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे। मैंने भी कल मरना है और आपने भी कल जाना है कि नहीं? इरादा है? ठहर नहीं है जी, जाना है ना? हमें दुनिया कितने दिन याद रखेगी? मुझे और आपको अगर आपकी खुशकिस्मती हो तो हो सकता है घर वाले हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, साल 2 साल याद रखें, उसके बाद but today my brothers, you are celebrating the Urse Mubarak of the personality who left this dunya 814 years ago. 814 years ago, after almost a millennium. What makes you remember him? Why are you holding this function in the masjid? Because Allah Ta'ala has promised in the Quran, Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Those who believe and those who do good, very soon Ar-Rahman, the most merciful, will create a love for them. This is the mawaddat and this is mahabbat and this is love that Allah has put in our heart for Ghaus-e Azam, and the likes of Khaja Azam are maqbool in the court of Allah. This is Dalil. This is dalil in the light of Quran and Hadith that they are chosen, accepted servants of Allah. जो नेकी करेगा, जो ईमान वाला होगा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत कर देगा। 8 सदियां 9 सदियां कोई छोटा जमाना नहीं होता। ये कमाल है उनका, सुभान अल्लाह। ये उनकी मुकामे मकबूलियत की दलील है कि आज हम ब्लैकबर्न में बैठ के, यूके में बैठ के, यूरोप में बैठ के उस बंदे खुदा का जिक्र कर रहे हैं। इसने पूरी जिंदगी अल्लाह 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 अल्लाह। This is dalil, brothers. This is clear, manifest evidence. The likes of Khaja Azam will not only live until 2025, his remembrance, no, until the day of judgment. Until the day of judgment, their jalalat and their darajat will be raised by Allah subhanahu wa ta'ala. ये कोई हमारा कमाल नहीं है कि हम उनका नाम ले रहे हैं, हम उनके नाम को 4 चांद लगा रहे नहीं। ये उनकी रहमत है कि हम जैसों को अपनी मजलिस में कबूल करें। You are not doing him a favor, he is doing you a favor. He rahmatullahi ta'ala alayhi, who's a Hasani Husaini Sayyid. Hasani Husaini Sayyid, great Sufi, great alim, great hafiz, great da'i, great muballigh, great wali, great wali. Ji, subhanallah. Awliya after him are all benefiting from his fuyuz and barakat.
You know, sometimes I think, I came to this country in February 1978 as a young boy. Many of you came before that. Many of the youngsters here were born maybe in the 90s or maybe in this century sometime. हम भी एक गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं ना जी, यूके, majority of UK non-Muslims. What have we done for Islam? What are our services for our deen? How much of our deen have we propagated? हमने दीन की खिदमत के हवाले से क्या कामयाबी हासिल की? हमने कितनों को दीन के करीब किया? कितने हमारी वजह से मुशर्रफ इस्लाम हुए? कभी सोचा आपने? हम भी एक प्यारे कुफ्र में रहते हैं। राजपुसांस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बटन दबाए तो पूरी दुनिया आपके सामने है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। और ख्वाजा आजम तने तन्हा sent by the Prophet, sent by Allah subhanahu wa ta'ala to preach Islam in the Indian subcontinent 900 years ago, and it is mentioned by his services to deen directly or indirectly through his khulafa, through his muridun. Some 9 million Muslims came to What was it about them? What did they have? Why so successful? Why such beautiful preaching of Islam? They were Muslims, we are Muslims. They claim to be followers of Nabi alayhi salatu. We claim to be followers of Nabi alayhi salatu wasalam. But where are we going wrong? You know, to celebrate the Aras-e Mubarakah of Awliya Kiram, Alhamdulillah, blessing, is the practice of the Ahlus Sunnati wal Jama'ah. सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह के किसी भी नेक बंदे का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। जब भी, जहां भी, आप तो अल्लाह के घर में वैसे ही मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मरकज है रहमत का, ये तो मरकज है। हर सुन्नी मस्जिद मरकज है, हर मस्जिद नहीं कह रहा हूं मैं। Every Sunni masjid is the center of the revelation and descending of the mercy of Allah. If you sit in the masjid, you're being showered. Wallahi Azim, rahmat is descending upon you now. I don't see it, you don't see it, but those who see it, they've told us. Rahmatul lil Alameen has told us. Rahmatul lil Alameen has told us. Inda zikr salihin tanzilur rahmah. Inda zikr salihin tanzilur rahmah. जब भी किसी अल्लाह वाले का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है. So this is our benefit. By mentioning this friend of Allah, we are guaranteed, inshallah, the mercy of the Creator. That's why we celebrate. That's why we commemorate. So he, rahmatullahi ta'ala alayh, like I said, is a Hassani Hussaini Sayyid. Just that in itself is a blessing. Najibut Tarafain. From mother side, Hassani. From father side, Hussaini. He, Rahmatullah alayhi, became a Hafiz-e-Quran, complete Hafiz-e-Quran by the age of 9. When he was only 9 years old, he was a complete Hafiz of the Quran al-Majid. And then with the permission of his mother, his father has already demised when he was 15 years old. With the permission of his mother, he sought knowledge. He gained education. He traveled far and wide. Originally from Sanjar or Sajis, another narration.
somewhere on the boundaries of present day Iran and Afghanistan. Then he sought knowledge for around 20 years. ilm deen ke husul ka shauq dekhe Khwaja Azam ko. 20 years more or less he traveled to the centers of learning in his time. Samarkand, Bukhara, Baghdad, Tashkent, you name it. Subhanallah, until he became an authority on the deen of Islam. And then with the help of his Shaykh, Hazrat Sayyidina Imamul Awliya Usmane Haruni narrations, Rahmatullahi Ta'ala alayh. Subhanallah. He traveled to Makkah Sharif, he traveled to Medina Sharif, and within the guidance of his teacher and his Shaykh, he presented his salam in the court of Rasulullah. Subhanallah. And when his Shaykh said, Moinuddin, present your salam in the court of the beloved, he did this, and in reply, the words were heard from the Qabr Mubarak of the Prophet ﷺ, Wa alaykumus salam, ya qutb al-mashayikh. आजकल टाइटल हम देते हैं, हजरत मुझे टाइटल दे, मैं हजरत को दूं, होता है ना, तू मुरा हाजी बको या मन तुरा हाजी बको, होता है जी। आजकल तो पहले से लोग कहते हैं भाई ये मेरे नाम के साथ कहना रहेगा। This is title given to him by Qutbul Mashayikh. Qutbul Mashayikh, the pillar, the pole of the Sufiya, the pole of the Shuyukh of his time, Hazrat Khwaja Muinuddin Ajmeri Rahmatullahi Ta'ala. When he is commanded to come to India, Ajmer Sharif, most of you have visited. Alhamdulillah, Allah take us again in his Qadman Mubarak, via Delhi, via Lahore, Subhanallah. And at the city of Lahore, he for 40 days does tillah at the Qabr Mubarak of Hazrat Sayyidina Tata Ganjbakhsh Ali Hujwiri Rahmatullah. Another giant before him, another mighty friend of Allah. 40 days he gains in the world of spirituality. And this is a message from his life for us. Awliya, even after their demise, they benefit the makhluk of Allah. Awliya, even after they are in their Qabr Mubarak, they continue to benefit. And when he left after 40 days, that is why the world-renowned couplet he said, Ganjbakhsh Faiz Alam Mazhare Noore Khuda Na ke Sara Peer Kamil Kamilara Rakwa. Even though he is in his Qabr Mubarak, Sayyidina Usman bin Ali Data Ganjbakhsh Ali Hujwiri, even though in Qabr Mubarak, he continues to benefit the makhluk of Allah. This is Aqidah. This is Aqidah of the Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Sunni Muslims believe Allah's friends are alive even in their Qabr Mubarak. They are alive in their graves wherever they may be. So he takes benefit from the tomb, from the grave of Data Sahib, and comes and settles in Ajmer Sharif, faces a lot of difficulty, lot of hardships, lots of opposition even from their leaders, even from the kings of the time. But he's steadfast. He's steadfast on the principles of Islam, on the tenets of Islam, on the teachings of Islam, and Allah gives him huge success. Allah gives him amazing success in preaching and teaching Islam in our part of the world. Most of us here, from the Indian subcontinent, I mean India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, we were not always Muslims, meaning our forefathers. Our forefathers, maybe 10 generations, maybe 20 generations, maybe 30. Allah knows that. We don't know when they accepted Islam. And one great personality who played a vital role in bringing Islam to our part of the world, you are celebrating his Urse Mubarak today. He's your Muhsin. He's done such great work for you and for your ancestors that today, Alhamdulillah, through the lives of Khwaja Azam, we are Muslims.
We are Muslims. So when we celebrate their days, their ayyam, their aras, most important for us brothers and sisters is not only to have a gathering, have speeches, have manqabat, have langar sharif and go home and forget everything. No. Take the lesson from their lives. ख्वाजा आजम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 9 साल की उम्र में आप मुकम्मल हाफिज कुरान बन गए। 9 साल की उम्र में आप मुकम्मल हाफिज कुरान बने। उसके बाद बहुत बड़े अपने दौर के आलिम बने, दाई बने, मुबल्लिग बने। और कुरान से आपका रिश्ता क्या था? You know how attached he was to the Quran, how connected he was to the Quran. Take this message with you. When was the last time we read the Quran Sharif? Sadly, within the Sunni circles, we've restricted reading the Quran. तीजा पढ़ लेंगे, 40वां हुआ तो ठीक है थोड़ा पढ़ लेंगे, सालाना हुआ तो. Apart from that, illa mashallah. I'm not saying everybody's like that. I'm talking about generally. We hardly read the Quran. We hardly give time to the Quran al-Majid. Khaja Azam radiyallahu ta'ala says, in my life there came a time when I used to complete 2 entire readings of the Quran al-Majid. Every day I finish 2 whole Quran al-Majid. ये कहना आसान है, हफ़ाज़े किराम मौजूद है, पूछें इनसे। बहुत मुश्किल है, yes of course, almost impossible. But this is karamat. This is in itself karamat. I read 2 whole Qurans every day. If you love him, and I know you love him, every Sunni loves him, alhamdulillah. Allah wants us to love him. It is his love that has brought you to the masjid today. So if you truly love him, take this message with you, my brothers. Quran al-Majid, connect to the Quran. Read the Quran. The more the better. कहने वाले कहते हैं कि if you want to speak to Allah, offer salah. And if you want Allah to speak to you, read the Quran al-Majid. Read the Quran al-Majid. Make it a habit, daily habit of every Muslim. Every mother and father should be reading the Quran. The more the better. So one message I want to leave you with, brothers, connect to the Quran. If you love Khaja Azam, this is his connection with the Quran al-Majid. कसरत से आप कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। कसरत से कुरान पाक की आप तिलावत किया करते थे। इंशाल्लाह हम भी करेंगे, हाथ उठाएं, इंशाल्लाह हम भी डेली करेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो। You know, beauty of the Quran, you never tire of it. Wallahi Azim, I'm telling you, you never tire of the Quran al-Majid. Every other book you read it once, twice, 3 times, you don't want to see it again. But Quran, subhanallah. Ask these ulama kiram. Quran, the more you read, the more you want to read. The more you understand, the more you want to understand. Yeah? This is the beauty because it is kalamullah. It is kalamullah. Read the Quran abundantly. ये मैं आपको आज ये मैसेज देना चाहता हूँ ख्वाजा आजम की जिंदगी के हवाले से। ठीक है ना? नाम लेना बहुत आसान है। नाम के साथ चिश्ती लिख देना, कादरी लिख देना, सोरवर्दी लिख देना, नक्शबंदी लिख देना, जो भी है टाइटल हम लिखते हैं, रज़वी लिख देना, ये सब आसान है। नारे लगाना बहुत आसान काम है। जहाँ अमल की बात आती है ना, उसमें मैं सबसे पहले शामिल हूँ। मैं पहले शामिल हूँ। The failures, learn brothers from the Sufiya Kiram. Their ta'alluq bil Quran, subhanallah. Read the Quran abundantly. ठीक है? First message I want to. I'm going to give you 3 messages inshallah. I've got 10 more minutes. Read the Quran abundantly. And reading also means understand. Understand the guidance. Understand the hidayat. Understand the anwar. The messages, the lessons. What does Allah want from you? Why was the Quran revealed? कुरान कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया अफदल सुने अभी ज़हन में आ गया शरीफ अफदल इबादत उम्मती
तिलावतुल कुरान। अफदलु इबादत, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? इबादत के लिए ना। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये कुरान पाक है और सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। The greatest form of ibadat for my ummah is the recitation of the Quran Majid. You know, Khadir Azam, take this message with you. Read the Quran abundantly. आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अगर मेरी दावत से पढ़ेंगे तो मुझे भी कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा। जी, दावत का यही फायदा होता है ना, दावत का यही फायदा होता है। आप किसी को दावत दे, अगर आपकी दावत से वो नेकी करेगा, अल्लाह उसे भी सवाब देगा, अल्लाह तुम्हें भी सवाब देगा। Become a da'i, become a one who invites towards khair. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Okay, so first point I had in mind, read the Quran abundantly, brothers. Read the Quran abundantly. You as a father, you as a mother, set the example. Set the example. Become the role model for your children. They see you day and night reading the Quran, connected to the book of Allah, inshallah, and you will see its fruits and barakats in your future generations. ठीक है ना? तो पहली दावत में आपको क्या दे रहा हूँ? इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, अब इससे भी ज्यादा पढ़ेंगे, हम इससे भी ज्यादा आप पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 2 ब्रदर्स, ख्वाजा आजम रज़ी अल्लाह तआला का एक मलफूज शरीफ है, हिज कौल मुबारक, हिज सेइंग, he says you cannot draw close to Allah. You all want to draw close to Allah? हर बंदा चाहता है कि हमें कुर्ब इलाही नसीब हो, हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, हम अल्लाह के और करीब हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सुने ख्वाजा आजम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि कुर्ब इलाही बगैर नमाज के नामुमकिन है। Impossible for you to draw close to your Creator without the observance of the 5 daily prayers. No other way. Every other amal, salih, good, alhamdulillah, rewardable. But without salat, and salat doesn't only mean Friday afternoon or Eid day, no, or only in Ramzan Sharif, no. Every day, even on a Sunday, even on a Saturday, even on bank holidays, 5 daily prayers. ख्वाजा आज़म क्या फरमाते हैं? Without the observance of the 5 daily prayers, you can never draw close to Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, करते हैं ना, गिरा समझते हैं ना, क्या बोझ है, बर्डन है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, वक्त नहीं है जी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। उसके सामने झुके तो देखो वो कैसे तुम्हें उठाता है, देखो कैसे उठाता है। सुभान, ख्वाजा आजम को ऐसे तो नहीं उठाया अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। All his life steadfast on the deen of Islam. So he's teaching us importance of the 5 daily prayers. You love him, follow his guidance. He says you cannot come close to Allah without your 5 daily prayers. इकामत, एक होता है नमाज पढ़ना, एक होता है नमाज की इकामत। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, इकामत और चीज का नाम, अकीमुस सलाह, अकीमुस, establish, hold on firmly, offer your salah with all its rules and regulations. You know our Nabi alayhi salatu wasalam, how much he loved salat. Subhanallah. How much he loved salat when he left this dunya at the age of 63. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam, when he left the dunya at the age of 63, youngsters, his last words, वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी करे, उसकी नाफिज हुकूमत पे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा।
He says, I never speak with my own desire and will. Whatever I say is a command from Allah. When he's leaving this dunya at the age of 63, his last words, my Sunni brothers, his last words were, As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Namaz, namaz. Even last moments of his life, he's telling his followers, commanding his ummah to hold on firmly to the 5 daily prayers. ठीक है ना? नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह. नमाज की पाबंदी करेंगे. 2 बातें मैंने बताई. तीसरी बात, आखिरी बात है. Third important lesson, you can learn hundreds from him. Hundreds. Wallah, I'm not exaggerating. Hundreds of lessons. Third point I want to mention today, in the light of this Qawl Mubarak, importance of good sohbah. Sohbah. Company. Sangat. Dosti yari. Sohbate salih tura salih tura. Sohbate talih tura talih tura. The company of the pious will also make you pious, inshallah. Khaja Azam stressed on the importance of good company, good sohbat. Be with the pious, be with the godly, be with those who are more connected to Allah. Because a man is known by the company he keeps. इंसान पर उसकी सोहबत का असर पड़ता है या नहीं? जैसी सोहबत होगी इल्ला माशा अल्लाह, वही आपका अखलाक होगा, वही आपका किरदार होगा. अच्छों के साथ उठना बैठना होगा, आप भी अच्छे बन जाएंगे इंशाअल्लाह. और बुरों के साथ उठना बैठना होगा, दोस्ती यारी दोस्तों गलत लोगों के साथ, फिर हम भी अल्लाह ना करे फिर वैसे ही बन जाते हैं. सोहबत का असर, as-sohbatu mu'assiratun. Sohbat always has an impact on your life. Sohbat always has an impact on your life. देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ. सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन. What makes Sahaba Sahaba? What makes Abu Bakr Abu Bakr? What makes Umar Umar? What makes Usman Usman? What makes Ali Ali? Namaz. Is it their Sahabi because of their namaz? Are they Sahabi because of their Hajj? Maybe you done more Hajj than they did. Maybe you read more Quran than they read. Maybe you do more Salah than they did. Salah is Zahiran I'm talking about. What makes a Sahabi Sahabi? Ask this ulama kiram. Sahaba became Sahaba because of the sohbat of Rasulullah. The word Sahabi comes from sohbat. The word Sahabi comes from sohbat. They had the sohbat of the best of creation. Can you match that? So sohbat. Khaja Azam radiyallahu ta'ala anhu teaches us importance of good sohbah. He says, good sohbah is better than doing good. एक होता है बंदा नेक काम करे, एक होता है बंदा नेकों के साथ सोहबत में आ जाए. फरमाते हैं अच्छों की सोहबत अच्छे काम करने से बेहतर है. अच्छों की सोहबत अच्छे काम करने से बेहतर. शेर याद आ गया, यक जमाना सोहबते बा औलिया. अभी हम रूहानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोहबत में हैं. रूहानी तौर पर हम हैं. यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज 7 साल ताअत बेरिया. To be in the company of the pious for a short time is better than hundreds of years of sincere worship. Be in the company of the pious. Be in the company of the awliya, sulaha, ulama. Allahu Akbar. Khaja Azam ने सुभानअल्लाह उलमा की क्या शान बयान की. उलमा की क्या शान बयान की सुभानअल्लाह. और ये वही करेगा जो खुद आलिम होगा. जी सिर्फ जुब्बा कुब्बा नहीं पहना होगा उसने, कोई बहुत रंगीन टोपी नहीं चढ़ाई होगी उसने. ऐसे है ना रुमाल पहन लेते हैं और फिर आप लोग उनको बहुत कुछ समझते हैं क्योंकि आपको पहचान नहीं है. अरे कोटि की आपको पहचान नहीं है. सच्ची बात बता रहा हूँ. पहचान पैदा करें, पहचान पैदा करें. जी ख्वाजा आजम रज़ी अल्लाह तआला का एक मलफूज शरीफ है. फरमाते हैं कि आलिमे बाअमल को देखना भी इबादत है. आलिमे बाअमल को देखना भी इबादत है. जस्ट टू लुक एट एन आलिम सुन्नी, सुन्नी
Just to look at a Sunni alim, ibadat. You are worshipping Allah just by gazing and staring at the one who has dedicated his life to the service of these. Haji Azam फरमाते हैं, youngsters, Subhanallah, muqam of mother and father. He says, simply to look at your parents is ibadah. Simply to look at your parents is, आप कहेंगे यार हजरत, my mother's like this and my father's like this, so what? So what? That's between them and Allah. For you, your Jannah is under her feet. For you, my brother, no matter what maqam you reach, your Jannah is under the feet of your mother. And when it comes to the father, हमारे नबी ने फरमाया, एक नजर बाप को प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखना अल्लाह हज मबरूर का सवाब है. Look at your father one glance out of respect and love. Allah gives you the reward of an accepted hajj. हज आपने भी किए, हज मैंने भी किए. कोई खड़े होकर दावा कर सकता है हजरत मेरा मकबूल है? नहीं. कईयों ने कई किए होंगे, 20 किए होंगे. एक कोई किसी की हिम्मत हो तो खड़ा होकर बताए मुझे. नो, लेकिन सरकार गारंटी दे रहा है. सुभान अल्लाह, गारंटी दे रहा है. Look at your father. This is why we celebrate the days of our awliya kiram. Look at your father once out of love. Allah gives you the sawab or accepted hajj. जब सरकार ने ये फरमाया ना, तो सहाबा ने अर्ज किया, अगर कोई बंदा, कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बेटी अपने बाप को दिन में 100 मरतबा देखे तो खुशकिस्मत है वो औलाद जो माँ बाप के साथ रहती है. अल्लाह खुशकिस्मत है जो माँ बाप की सर्विस में है, कदमों में है. I pay tribute to you, salam to you. You're lucky. You're lucky. Your parents are still alive. Wallahi Azim, you're lucky if your parents are still alive. Take their du'as, serve them, look after them. Our Nabi Sallallahu says, look at your father once, Allah gives you sawab of accepted hajj. Sahaba ने पूछा, what if you look at them 100 times a day? सरकार ने फरमाया, अल्लाह क्या कोई कमी है? कोई कमी है? फरमाया, अल्लाह अकबर व अत्यब. अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत पाक है. 100 मरतबा क्या, तुम 1000 मरतबा देखोगे, अल्लाह 1000. This is why we celebrate the days of our awliya kiram, aras of this awliya kiram, because we want to take messages from them. And I finish with 2 more minutes inshallah, because I need to get back to Manchester. I have a guest at home. आखिरी बात है, ख्वाजा आजम की मकबूलियत का ये आलम है. सुभान अल्लाह. उनके गुलामों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी जैसे लोग, उनके गुलामों में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसरूक गंजे शकर जैसे लोग, गुलामों के गुलाम में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, उनके गुलामों में आईने हिंद अखी सिराज है, उनके गुलामों में हजरत सैयदना अलौहक मंडवी हैं, गुलामों के गुलाम में हजरत मखदूम सिंगानी है. आजम क्या मुकाम होगा. सुभान अल्लाह. When we can't understand even his disciples the मुकाम and मर्तबा, think of his azamat in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. आखिरी बात अर्ज करता हूँ. When he passed away, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, साहिब अखबारुल अखियार शरीफ, great giant alim and Sufi and wali, muhaddis, भी शेख मुहद्दिक रहमतुल्लाह अलैह, अखबारुल अखियार शरीफ में आपने लिखा है कि जब ख्वाजा साहब का विसाल हुआ, विसाल मुबारक at the age of 97, अजमेर शरीफ, 6th of Rajabul Murajjab 633 Hijrah. When he passed away, disciples entered the room in the morning. He had passed away, Ruh Mubarak removed from the body, and on his forehead with qalam qudrat. पता नहीं कलम जो हमने रखा होता है, हम लिखते हैं जी, अल्लाह ने लिखवाया. अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ उसकी पेशानी पे लिखो. क्या हज़रत शेख मुहक्किक writes this in his अखबार वगैरह शरीफ. On his forehead the words were written, हाजा हबीबुल्लाह मातफी हुब्बिल्लाह. ये अल्लाह का हबीब है, ये अल्लाह का हबीब है, और इनका इंतकाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ. This is again दलील of what closeness
had with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah मुझे आपको उनके फज़ल व बरकत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप तमाम अहबाब से इजाज़त लेता हूँ और अगर मैंने निकलना है